Hello everybody, this is me, Muhammad Hussain Siddiqui, and in today's video we are going to talk about passive voice. It is going to be a quick introduction with examples of all passive voices, and I'm sure that after this video you will be able to form passive voice without any errors. So here we go, introduction to all passives. First of all, we need to remember the rules. There are certain rules of passive voice that are followed every time with every passive that you make. Right? अगर आपने ये rules सही तरीके से पढ़ लिए, तो I'm sure that you will never be forming a wrong passive voice. Right? So let's go for the first rule. What do we have here? Let's see. The first rule is we always use verbs third form. Means तमाम passive voice में means हमारे पास 8 passive होते हैं. I will just write right now कि वो कौन कौन से होते हैं. उन सब के साथ हम verb के अंदर verb की third form ही लगाएंगे. मतलब without that there is no passive, right? So always remember to use verb third form in passive voice, right? Okay, in this video we'll be talking about all passive voices, but if you want to learn each passive from each lesson video lecture, so you can simply go and search for hashtag #SirSam, or you can search for my channel and learn the videos, the learn passive voice, all of them, one by one, that are made specifically on the topics. Okay, so let's go for the next rule, right? The next rule is what? We can only form passive with transitive verbs. Now, here a question arises that what is a transitive verb? There are two kinds of verbs. Number one is transitive, and the second one is intransitive. Now, what is a transitive verb? Its definition is a verb that needs or has an object. What is an intransitive verb? Simply opposite, a verb that does not need or does not have an object. अच्छा, अब हमें पता कैसे चलेगा कि किस वर्ब में ऑब्जेक्ट है और किस वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है? देखें, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है पैसिव बनाने में, वो ऑब्जेक्ट के साथ ही होती है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए. रिमेंबर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? द डेफिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑन वर्क, द वर्क इज डन. जिस पर काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट है. ठीक है, दैट्स क्लियर. अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि भाई I go to school. Now if I ask you a question कि इसके अंदर subject क्या है, you will simply tell me कि sir, I is the subject. Why? Because I is a doer. Then if I ask you what is the verb, you will tell me go is the verb. Then when I ask you what is an object, you will say school. हालांकि स्कूल के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, but you will still say it's school. क्योंकि हमें अपने स्कूल में यही बताया गया है कि भाई जो सेंटेंस के आखिर में आए वो ऑब्जेक्ट होता है. दिस इज नॉट ट्रू. व्हाट इज ट्रू इज जिस पर काम किया जाए वो स्कूल है, तो आप वो ऑब्जेक्ट है. तो स्कूल पे काम तो नहीं किया जा रहा, सिंपली गोइंग टू स्कूल, तो द स्कूल इज नॉट एन ऑब्जेक्ट बट एन एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस, राइट? तो दिस इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो इसीलिए दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट. अब
हमें पता कैसे चलेगा कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या प्लेस है? यू नीड टू आस्क टू क्वेश्चंस to your verb. Number one is what, and number two is where. अब अगर आपका सवाल सेंटेंस से where में आ रहा है तो it's going to be a place, और अगर what में आ रहा है तो it's going to be an object. For example, if I say I cook in kitchen, तो इससे सवाल पूछिए, क्या पूछेंगे आप इससे? Either you will ask what or you will ask where. तो I cook in kitchen, तो इससे सवाल यही बनता है कि भाई where do you cook? तो यहां पे जो वर्ब है दिस इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब. बट अगर मैं कहूं कि I cook बिरयानी विच इज अ वेरी फेमस डिश इन कराची, राइट, तो इट्स गोइंग टू बी बिरयानी क्या हुआ यहाँ पे? ऑब्जेक्ट हो गया. क्यों? क्योंकि अब आप बिरयानी पर काम कर रहे हो. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कम टू नो व्हाट इज ए ट्रांजिटिव वर्ब एंड व्हाट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब. कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. तो सम वर्ब्स दैट आर ऑलवेज transitive and some like not always transitive but some verbs that are always intransitive. ठीक है, तो transitive की example लेते हैं. cook, eat, finish and so on. उसके बाद हम intransitive की example ले लेते हैं. go, come and so on. Right, so this is clear. The second rule ये सबसे important है. Now we have the third rule. What is the third rule? Just give me a moment, let me just correct the font. Okay. So the rule is कि भाई we can only form passive with, we cannot form passive with all perfect continuous and future continuous tense. मतलब हम तमाम perfect continuous जैसे कि present perfect continuous, past perfect continuous और future perfect continuous, इन सब के साथ हम passive नहीं बना सकते और हम future continuous के साथ भी passive नहीं बना सकते. ठीक है, you need to keep this in your brain. ठीक है, तो अगर कहीं सवाल लिखा हुआ आ जाए कि भाई make passive with future continuous tense, तो you will simply write not possible. Right? Or the fourth and the last rule is that when you convert active into passive or passive into an active, the subjective pronoun replaces an objective pronoun, and objective pronoun replaces subjective pronoun. अगर आपने ये चार रूल अपने जहन में रख लिए तो आई एम श्योर यू आर नेवर गोइंग टू फॉर्म ए रॉन्ग पैसिव. राइट, तो पहला रूल, वी ऑलवेज यूज verb third form, we can only form passive with transitive verbs. Then yes, we cannot form passive with all perfect continuous tenses and future continuous tense. After that, we have got the fourth rule that when you convert an active into passive and passive into active, subjective pronoun replaces the objective pronoun, objective pronoun replaces the subjective pronoun. ठीक है, I hope these rules are very much clear to you. अच्छा, इनकी डेफिनेशन सेम रहती हैं तो हमें यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई कि इसका अब हम जब हम टेंस पैसिव बना रहे हैं तो क्या उसमें डेफिनेशन भी चेंज हो रही है? तो मेरे भाई डेफिनेशन सेम रहती है. ठीक है, द डेफिनेशंस डू नॉट चेंज व्हेन यू कन्वर्ट एन एक्टिव इनटू पैसिव एंड पैसिव इनटू एक्टिव. आफ्टर दैट लेट्स गो फॉर a first tense which is present simple passive. Right? What is the definition of this tense? As you know, I keep definitions very simple, so it's going to be that happens. जो भी होता है is present simple tense, right? आप आते हो, जाते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, जो भी daily life में या once in a blue moon, whenever if something happens, you're going to use
present simple tense, right? उसके बाद let's talk about the helping verbs of present simple passive. They are is, am and are. ठीक है, और हमें मालूम है कि we use verbs third form, तो it's going to be very simple. तो इसको हम कॉलन लगा देते हैं. खैर चलें, If helping verb की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह ले लेगा एंड दैट्स इट, राइट. तो अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं. हाउ यू आर गोइंग टू फॉर्म ए पैसिव, राइट. एग्जांपल में फॉर एग्जांपल आई से आई बिल्ड माई हाउस, राइट. ये हो गया एक्टिव. अब अगर मैं इसको पैसिव में कन्वर्ट करूंगा तो हाउ इट्स गोइंग टू बी, ओके, माई हाउस, क्योंकि ऑब्जेक्ट कम्स फर्स्ट मींस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन रिप्लेसेस द सब्जेक्टिव प्रोनाउन. तो माई हाउस, अच्छा इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज. ओके राइट, क्योंकि हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब्स है तो सिंगुलर के साथ इज आता है. एंड वर्ब्स थर्ड फॉर्म, तो बिल्ट बाय मी. अच्छा अब सवाल ये आता है कि भाई ये बाय मी क्या ये जरूरी है? कुछ ट्रेनर्स कहते हैं कि ये जरूरी है, दो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, राइट. क्यों जरूरी नहीं है, आई विल टेल यू. लेकिन इसकी पहचान क्या है, फिर हम पैसिव वॉइस को पहचानेंगे कैसे? हम पैसिव को पहचानेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म एक अनयूजुअल हेल्पिंग वर्ब के साथ, राइट. अब देखें इस एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, वी नो इट, वी यूज आईएनजी फॉर्म विद दैट. But when we see a verb third form here, a past participle here, so what is going to happen? That it is a passive for sure. ठीक है? एक और एग्जाम्पल लेते हैं. We transform cars. तो इसको हम कैसे बनाएंगे? Cars are transformed by us, or you can say cars are transformed, simple. अब अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे या इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा? तो it is my house is not, we know the rule, built by me. Interrogative, is my house built by me, and with a question word. So why is my house built, right? So this is how you're going to form a negative. It's the rules will remain the same कि भाई नेगेटिव के अंदर वर्ब की नेगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगता है, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है. आई होप इट इज क्लियर. अब हम आते हैं अपने दूसरे टेंस पे, व्हिच इज ए पास्ट सिंपल पैसिव. ओके, रूल्स हमें ध्यान में रखने तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी. रूल्स क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग ऑब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, सब्जेक्ट गोज लास्ट, सब्जेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, ऑब्जेक्ट के बगैर पैसिव नहीं बनता, वर्ब ट्रांजिटिव होना जरूरी है. ठीक है भाई, तो वी हैव पास्ट सिंपल पैसिव. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस टेंस? मैं पहले बता चुका हूं. लेट्स अंडरस्टैंड अगेन. दैट हैपेंड, जो हुआ था. अब जो भी हुआ था इज पास्ट सिंपल. ठीक है, आई मीन यस पास्ट सिंपल ऑब्वियसली. तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं इसके? was and were, right? ये दो ही हेल्पिंग वर्ब्स हैं और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, she missed that opportunity, right? अब she missed that opportunity, it's a past simple tense. तो अगर मैं इसको पैसिव में कन्वर्ट करूंगा तो बिल्कुल सेम रूल्स रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब बस चेंज हो जाएगा. तो that opportunity was missed by her. Negative, it's going to be that opportunity was not missed by her, and interrogative was that opportunity missed by her.
Let's go for with WH question. How was that opportunity missed? Right? So this is how we do that. हम अपना टाइम बचाने के लिए पूरे को कॉपी कर लेते हैं ताकि we won't have to write again and again. ठीक है भाई. तो उसके बाद हमारे पास आता है फ्यूचर सिंपल. फ्यूचर सिंपल पैसिव में what we do is the definition will be कि भाई जो काम होगा that will happen. Helping verbs इसका एक ही helping verb होता है, that is will be. Example, she will miss the opportunity, and in passive is going to be simply the opportunity will be missed by her or will not be missed by her, or will that opportunity be missed by her, or how will that opportunity be missed by her. ठीक है, तो this is how we have future simple passive voice. I hope things are getting clear. If there is any question occurring in the middle, please note that down and do write the question in the comments below so that I can answer your queries. Right? उसके बाद let's go for a present continuous passive. अच्छा, कौन से कंडीशन के साथ पैसिव नहीं बनता, कोई मुझे बता सकता है? Yes, with future continuous tense we do not form a passive. So the definition is that is happening or going on. Helping verbs are is, am, are plus being. मतलब is being, am being, are being, right? We use it that way. तो अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं कि भाई she is missing that opportunity, it's going to be like the opportunity is being. आप देख रहे हैं रूल्स बिल्कुल सेम फॉलो हो रहे हैं, सब कुछ सेम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहे हैं. दिस इज हाउ वी फॉर्म पैसिव वॉइस. आपके ध्यान में अगर वो 4 रूल्स अभी तक मौजूद हैं तो दैट्स परफेक्टली फाइन, और आप इसके बाद कभी भी गलत पैसिव नहीं बना सकते. ओके, इज नॉट बीइंग नेगेटिव में एंड इंटेरोगेटिव में is that opportunity being missed by her, or how is that opportunity being missed. That's it. ठीक है, तो this easy it is. ये इतना आसान है. पैसिव सबसे आसान है. खैर, अब चलते हैं हम लोग अपने पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव की तरफ. इसका हेल्पिंग वर्ब है was या were with being, right? मतलब was being या were being. अगर मैं बोलूँ she was missing the opportunity तो इसका पैसिव में सिंपल was being हो जाएगा ये, और अगर प्लूरल होगा तो वो were being हो जाएगा. ठीक है, why I'm writing were being. Okay. Was that opportunity being, and how was that opportunity being missed, right? रूल्स की तरफ एक दफा और जाते हैं ताकि आपको एक दफा रिव्यू कर लें. We always use verbs third form. We are using that. We can only form passive with transitive verbs. We are doing that. We cannot form passive with all perfect continuous tenses and future continuous tense. We are not doing that obviously क्योंकि बनता ही नहीं है. When you convert active into passive and passive into active, the subjective pronoun goes, subject goes last, object comes first. And this is what we have been following. ठीक है, चले अब फ्यूचर कंटिन्यूअस पैसिव बनाते हैं. बनता है फ्यूचर कंटिन्यूअस पैसिव? ऑब्वियसली नॉट. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस पैसिव नहीं बनता, तो नाउ वी आर जंपिंग ऑन टू प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव. इसकी डेफिनेशन है दैट व्हाट दैट हैज हैपेंड, जो हो चुका है. इसकी हेल्पिंग वर्ब्स भी सिंपल है, हैज बीन और हैव बीन, राइट? वी यूज दिस एज हेल्पिंग वर्ब्स, राइट? एंड सपोज द एग्जांपल इज शी हैज मिस्ड दैट अपॉर्चुनिटी, सो द अपॉर्चुनिटी हैज बीन मिस्ड,
द अपॉर्चुनिटी हैज़ नॉट बीन मिस्ड. कभी भी अपॉर्चुनिटी मत खोइएगा किसी भी किस्म की मिले, बिकॉज यू नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत भारी होती है. खैर, हैज़ दैट अपॉर्चुनिटी बीन मिस्ड एंड हाउ हैज़ दैट अपॉर्चुनिटी बीन मिस्ड. राइट, सो यू अंडरस्टैंड कि भाई these are the helping verbs. हमने वही सेम रूल्स फॉलो किए हैं, सब कुछ वही किया है. चलें एक अलग से एग्जाम्पल लेते हैं, एंड आई वांट यू टू फॉर्म इट्स पैसिव. ठीक है, द एग्जाम्पल इज ओके यू टीच अस. तो इसमें सॉरी एक काम करते हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट की ले लेते हैं. यू हैव टॉट अस, राइट. तो अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है? अस, आप लोग ऑब्जेक्ट हैं. ठीक है, तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज अस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो वी एज वी नो वी इज प्लूरल, तो वी हैव बीन टॉट बाय यू. नेगेटिव विल बी वी हैव नॉट बीन टॉट. इंटेरोगेटिव, हैव वी बीन taught, right? I hope you are very much clear with that. हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं है. ठीक है, उसके बाद we have another tense, I mean another passive, which is past perfect. ठीक है, काम करते हैं, हम ऊपर वाले को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा लिखना ना पड़े. लिखने का मसला नहीं है एक्चुअली. इफ द वीडियो गोज लॉन्गर, students run away. I don't know why. Education के लिए अभी ये कोई मूवी होती तो everybody would have watched it like for 3 hours. खैर, अब ये बड़ा मसला है हमारे अंदर, हम सब के अंदर, इवन मेरे अंदर भी. खैर, past perfect की definition है that had happened, जो हो चुका था. इसका helping verb है had been. Only one helping verb which is had been. तो अगर मैं इसी की एग्जाम्पल लूँ कि भाई she had missed that opportunity, मतलब उसने वो अपॉर्चुनिटी खो दी थी या वो अपॉर्चुनिटी खो चुकी थी, तो simply had been and had not been, had that opportunity been and how had that opportunity been missed. अगर मैं इसको इसमें करूं, you had taught us को, तो ये क्या हो जाएगा? we had been taught, we had not been taught and had we been taught. So this is how it will go on. चलें, अब हमारे पास हमारा आखिरी पैसिव बचा है. You would be thanking God, right? कि सर क्या हो गया, आज तो आप चुप ही नहीं हो रहे. बहरहाल, तो let's talk about the last passive, which is a future perfect passive, right? अब future perfect के अंदर हमारी क्या डेफिनेशन होती है? That will have happened, मतलब जो हो चुका होगा. The helping verbs are will have been only, right? तो अगर मैं इसका एक सेंटेंस बनाऊं, she will have missed that opportunity, कि वो अपॉर्चुनिटी खो चुकी होगी, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? The opportunity will have been missed. या फिर नेगेटिव, will not have been, will that opportunity have been. You see examples, and how will that opportunity have been missed, right? So this is how we do that. इसका अगर इसमें बनाएंगे तो you have taught us, we will have been taught, we will not have been taught, will we have been taught, and so on, right? तो ये हमारे तमाम passive voice हो गए. I hope everything is clear here. Nobody has any confusions. If still there is any confusion, you're supposed to ask me or ask any one of your trainer. But आपने सिर्फ और सिर्फ ये रूल्स ध्यान में रखने हैं. अगर आपके ध्यान में ये रूल्स हैं, I promise you that this is going to be a piece of cake for you. Making a passive will be very, very easy for you. Okay? Till then, take good care of yourself. Allah Hafiz, everybody. Goodbye. For more videos, please subscribe our YouTube channel and don't forget to press the bell icon.